ठीक है, तो ये फोर्थ ऑक्टेट में हम लोग सबनेटिंग कर रहे हैं। तो /25 फोर्थ ऑक्टेट की साइज क्या है? साइज है 256। और हम फोर्थ ऑक्टेट में कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्ट में। ब्लॉक साइज क्या आ जाएगी? 128। तो ये हमारी ब्लॉक साइज आ जाएगी, जो सबनेट बनेंगे उनकी साइज आ जाएगी। साइज अब देखो, सबनेट 2 जो सबनेट बन रहे हैं हमारे, सबनेट 1 एंड सबनेट 1, what will be the subnet 1? सबनेट 1 ये आपका बनेगा /25। क्यों? क्योंकि ये जीरो स्टेट, देखिए ये वाला कर रहे हैं, ये लास्ट ऑक्टेट स्टार्ट फ्रॉम 0, 2 पार्ट में डिवाइड किया। बिफोर डिवीजन क्या है इस सब नेटवर्क में? इट विल गो स्टार्ट फ्रॉम 0, इट विल गो अप टू 255। ओके, सबनेट 1 स्टार्ट फ्रॉम 0, देखिए सबनेट भी ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगा। नाउ सबनेट 2 आपका क्या है? /25। ठीक है, /25 तो आना ही हमें। और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 128। So first subnetwork start from 0, it will go up to 127. So total IP address in this subnet 128. Second subnet start from 128 and it will go up to 255. And this particular subnet you can allot to lane 1. This particular subnet you can allot to lane 1. Now you are having this subnet 2. This subnet 2 you can further divide into two equal parts. तो इसकी अभी क्या साइज है? इसकी अब साइज है 128, हमें मालूम है इट्स 128, स्टार्ट फ्रॉम 128 एंड एंड्स अप एट 255. सो अगर सिंगल बिट बोरो करता हूं तो यू कैन डिवाइड इनटू 64. तो 64 में अगर डिवाइड करता हूं, कहां पे हम सबनेटिंग कर रहे हैं? फोर्थ ऑक्टेट में कर रहे हैं। तो ये जो सबनेट आएंगे इसके बाद में सबनेट जो आप बोले हैं उसको सबनेट 3 बोल दें चलो आप, that start from 128, single bit borrow किया, so now it is 226. And now subnet 4 that is 64 ऐड कर दें, that is 192/26 and this subnet 3 can be allocated to lane 2. This can be allocated to lane 2. Now this subnet is left with us, this is spare with us, you can say. Size of this subnetwork is 64 साइज है इसकी। अभी हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ लेन 3 की। यहाँ एक पर्टिकुलर जो मैंने केस लिया वहां पे लेन 3 में 5 रिक्वायरमेंट है। उसको करने के लिए या तो इसको 32 में ब्रेक कर दें या डायरेक्टली 8 पार्ट में ब्रेक कर दें, दैट वे आल्सो यू कैन डू। ये भी कर सकते हैं आप कि इसको 64 है, 64 डिवाइडेड बाय 8, 8 जाए 64, 8 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। 8 पार्ट में डिवाइड कर, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड? 3 बिट्स आर रिक्वायर्ड, 3 बिट लेनी पड़ेंगी आपको। तो अगर आप 8 में करते हैं तो सब नेटवर्क कितने बनेंगे इसके? 8 सब नेटवर्क। चलो वैसे कर देता हूं। देखो दूसरा एक पहले बताया था वो भी है आपके पास ऑप्शन, ये भी ऑप्शन है। सब नेटवर्क 5, इसको सबनेटिंग किया, हाउ मेनी बिट बोरोड? 3, नाउ 3 बिट बोरोड, सो नेटवर्क सब नेटवर्क 5 3 means 26 plus 3 9, 29. Yes, so sub network 5 starts 192. Now subnet 6 it is 200, like that. Subnet 6, subnet 7, like that you can do. So 12, subnet 12 लास्ट जो आपका सबनेट होगा, that will be subnetwork 12.
और वो उसका जो आईपी होगा दैट विल बी 248. सो दिस एनी सब नेटवर्क ये वाला देते हैं, फर्स्ट ही देंगे ऑब्वियसली. फर्स्ट सब नेटवर्क दैट कैन बी allotted to lane 3, that can be allotted to lane 3. और अभी हमारे पास रिमेनिंग हाउ मेनी सब नेटवर्क्स लेफ्ट विथ अस, स्पेयर यू कैन से 7 सब नेटवर्क्स left with us, spare with us, and that can be at the size of the sub networks. Each sub network is 8 that can be allocated in future as per the requirement. तो ये हमारा वेरिएबल सब नेट मास्किंग का एक आईपी से मैंने समझाया आपको. ठीक है सर, समझ में आप स्लैश वगैरह स्लैश का मतलब सर all these are numbers only after slash or anything. oh ठीक है. अशोक सर, is it okay? अशोक सर, is it okay now? ओके सर, थैंक यू. ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल है सबनेट मास्किंग का एक मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करी है. प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है सेम एग्जांपल है जैसा ये हमारे पास एक केस था कि 3 राउटर्स आर देयर, दीज आर द रिक्वायरमेंट एंड इस क्लास सी नेटवर्क वी आर हैविंग. सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल मैंने लिया, एक कोई भी एक क्लास सी नेटवर्क लिया, उसकी 3 रिक्वायरमेंट मैंने फुलफिल की, लेन 1 लेन 2 लेन 3. उससे हमको ये क्लियर हुआ वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग. ठीक है, अब देखिए हम सुपर नेटिंग और भी एग्जांपल है, मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा. तो आप वहां भी ये चीजें जो है आप मेल आईडी, चलो मैं आप लोगों से गैदर कर लूंगा, मैं एक फॉर्म आपको जो है शेयर कर दूंगा. उस फॉर्म पे आप लोग अपनी डिटेल फिल कर देना, जिससे कि मेरे पास आपकी मेल आईडी आ जाएंगी. उस मेल आईडी से मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करना आप लोगों को, या वर्कशीट वगैरह, दैट आई कैन शेयर विथ यू ऑल. Okay, so before discussing any worksheet, now I want to discuss, because variable subnet masking or static length subnet masking, so many examples are there, so many cases are there, some worksheets are there, some, so that we can discuss. But before discussing all these things, or we can I can share with you, before that I think we should discuss supernetting concept. So supernetting concept, it's just reverse. Like take a case कि मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल देखा कि भाई वेस्टेज ऑफ आईपी है, लिमिटेड आईपीज आर देयर इन IP version 4. We have to conserve the IPs, we have to minimize the wastage of IP addresses. But a one reverse case you can take, like a class A networks, some networks are already allocated. Now class B also allocated, and few left with IANA, and their policy that not to further distribute, allocate class A and class B now to any organization or any regional internet registries. In that case, now they are allocating class C networks, and the size of the class C network is 256. But it may be a case that any organization, it's a rarely happening, but may happen that one organization demand 1000 IP address in a single network, and as IANA allocating 250 size networks, organization demand is 1000 in the single network. So how to fulfill that requirement? It's this requirement is just reverse. You can say here we need bigger size network, we are having a smaller size network and we need bigger network. Earlier case was we were having bigger size network and requirement of smaller network. So what to do in that case, in this type of situation? म्यूट कीजिए, कौन ऑन हो गई?
अनम्यूट होके म्यूट रखिए, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, इन बिटवीन थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, इस केस में स्मॉलर क्लास सी नेटवर्क जो इयाना लोकेट कर रहा है, उन क्लास सी नेटवर्क्स को हम मर्ज करके हम बिगर नेटवर्क बना सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सुपरनेटिंग. Merging a smaller network to create the bigger network is called supernetting, and by this way we can fulfill a requirement. Any organization bigger demand of bigger network requirement can be fulfilled. Other than that, routers utilize this concept very much. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रहा है तो बहुत ही रेयरली अकरिंग है, क्योंकि जो है हम लोग पब्लिक आईपी, लार्ज नंबर पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, and class C is sufficient. Yes, for private IP addressing you can utilize this concept supernetting, but other than that routers, एक केस देखिए आप, routers actually connect different networks. In the networking, routers plays a very important role. They connect different networks, they switch IP packets, they forward IP packets, they take the decision, or you can say they select the optimum path to forward the IP packets. So they are very important device in the networking field. And how they take these decisions? They create a routing table, and by checking the routing table entries they take the decision. कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी डिवाइस है, वो अपने आप तो कुछ है नहीं, उसके पास जो डेटा है उस डेटा को चेक करके वो डिसीजन लेता है. सो from where it get the packet, from where to whom it has to be delivered the packet. So accordingly, by checking the routing table entry, routers take the decision to forward the packet. और ऑब्वियसली जो नेबरिंग कनेक्शन है उसके पास, जो भी नेबर्स कनेक्टेड हैं, उन नेबर्स में से सिलेक्ट करना है कि टू विच नेबर इट शुड बी हैंडेड द पैकेट. ठीक है, तो इनमें इसके लिए रूटिंग टेबल क्रिएट होगा. अब बिफोर सबनेटिंग केस देखिए आप, सबनेटिंग नहीं था कॉन्सेप्ट पिक्चर में, उस केस में नेटवर्क वेरी लेस नंबर ऑफ नेटवर्क्स वाज देयर, सो रूटिंग टेबल एंट्रीज वाज वेरी लेस, एंड राउटर्स को है सिर्फ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, whatever they can easily find out from to checking the first octet. From there they can find out, and so no need to send subnet mask entry. एक तो पहली बात, रूटिंग टेबल एंट्री बहुत कम थी क्योंकि नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क लेस थे. सेकंड, उसके साथ में सबनेट मास्क सेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि राउटर अपने आप पता लगा सकते थे क्लासफुल एड्रेसिंग में कि कौन सी क्लास का एड्रेस है, अकॉर्डिंगली दे कैन अटैच द सबनेट मास्क, क्योंकि थ्री सबनेट मास्क थे, डिफॉल्ट सबनेट मास्क, दे कैन अटैच इजीली, सो नो नीड टू ट्रांसमिट सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन विद द रूटिंग टेबल. अब ये क्या करते हैं, राउटर क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है इनके पास इंफॉर्मेशन है वो नेबर से शेयर करते हैं. रूटिंग टेबल एंट्रीज दे शेयर विद देयर नेबर्स, दैट्स व्हाई in that way they update their routing table entries, and they also get information from their neighbors. They share the information, they get the information from their neighbors. अच्छा, सेकंड केस क्या हुआ कि जब सबनेटिंग पिक्चर में आया तो सबनेटिंग के केस में लैक्स ऑफ नेटवर्क्स आपने क्रिएट कर दिए, स्मॉलर सब नेटवर्क्स क्रिएटेड इन द सबनेटिंग कॉन्सेप्ट. तो रूटिंग टेबल एंट्रीज भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई, लैक्स एंट्रीज हो गई राउटर के पास, और लैक्स ऑफ एंट्रीज को एंटर करना, फिर जब आपके पास कोई पैकेट आया राउटर के पास, उसमें उसको डिसीजन लेना कि किसको फॉरवर्ड करूं, देन दे हैव टू चेक ऑल द एंट्रीज अवेलेबल विद देम. सो इट्स अ रियली वेरी टीडियस जॉब टू चेकिंग ऑल द लैक्स ऑफ एंट्रीज, to enter those entries, checking those entries, it takes time, so delay will be there, processor load will increase, और ये जो है फिर क्या जो है आपका एक हाई कैपेसिटी हाई कॉन्फ़िगरेशन राउटर रिक्वायरमेंट आ जाएगी, वहां पे हाई कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी. तो ये प्रॉब्लम आई सबनेटिंग से. तो सुपरनेटिंग कॉन्सेप्ट ने उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में हेल्प करी. क्या, कैसे करी हेल्प कि लेट टेक ए एग्जांपल, वन राउटर which is having multiple ports and multiple networks are connected with that router.
और वो किसी एक बिगर नेटवर्क के स्मॉलर सब नेटवर्क्स हैं जो उससे कनेक्टेड है. In that case, router can utilize subnetting, supernetting concept. Router can merge all those smaller network and create a single entry, create a single super network, and they can make the entries and they can advertise the single entry to the neighbor. Instead of number of subnetwork entry, they, by utilizing the supernetting concept, they can minimize them in a single, a less number of entries, and they can advertise that less number of entries to their neighbors. Like that, the number of entries in the routing table can be minimized by utilizing the supernetting concept. तो राउटर्स बहुत यूटिलाइज करते हैं इसको. और दूसरा क्या है, राउटर में सबनेटिंग जब आप यूज करते हैं तो सबनेटिंग में राउटर हैज टू सेंड द subnetting information, subnet information with the IP, with the